नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की नई सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इसने 9 पुराने श्रम कानूनों को मतलब ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ जैसे कानूनों को एक साथ मिला दिया है। हमने जानकारी जुटाई है सरकारी वेबसाइट्स से, कुछ कानूनी लेखों से और रिसर्च पेपर्स से भी। मकसद ये है कि इनको ठीक से समझें कि भाई इस नई संहिता में असल में क्या बदला है और इसका असर क्या हो सकता है कर्मचारियों पर, कंपनियों पर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है, जैसा मैंने कहा कि 9 अलग-अलग कानून अब एक हो गए हैं। ये अपने आप में ही एक काफी बड़ी चीज है ना? हाँ, बिल्कुल। कानूनों को सरल बनाना, एक साथ लाना, एक मकसद तो साफ लगता है, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसका दायरा बढ़ाया गया है। अच्छा, किस तरह से? अब इसमें सिर्फ वो पारंपरिक कर्मचारी नियोक्ता वाले रिश्ते ही नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी शामिल हैं। हाँ। और संहिता में पहली बार इनकी बाकायदा परिभाषाएं दी गई हैं, जो पहले के कानूनों में उतनी साफ नहीं थी। हाँ, ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स वाला मुद्दा तो आजकल बहुत अहम है। पर जो पुराने सिस्टम थे जैसे ईपीएफ और ईएसआई, उनमें क्या खास बदलाव हुए हैं? क्या अब ये ज्यादा लोगों पर लागू होंगे? देखिए, लागू होने के लिए जो कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या थी, जैसे ईपीएफ के लिए 20 कर्मचारी होना जरूरी था, हाँ, वो सीमा तो वही रखी गई है। मतलब बहुत छोटे संस्थान शायद अब भी दायरे से बाहर रहें, लेकिन एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव यह है कि स्वैच्छिक कवरेज का विकल्प दिया गया है। अच्छा, स्वैच्छिक कवरेज यानी अगर मालिक और ज्यादातर कर्मचारी चाहें तो कम संख्या होने पर भी ईपीएफ या ईएसआई जैसी योजनाओं को चुन सकते हैं, या चाहें तो बाहर भी निकल सकते हैं अगर शर्तें पूरी हों। तो ये तो लचीलापन लाता है व्यवस्था में। बिल्कुल। और ईएसआई का दायरा एक और तरह से बड़ा है। अब ये उन खतरनाक काम वाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा जहां सिर्फ एक कर्मचारी है। सिर्फ एक? अच्छा जी। साथ ही खासतौर पर असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए भी ईएसआई जैसी योजनाएं बनाने का प्रावधान है। और रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार जरूरी कर दिया है, और ये श्रम सुविधा पोर्टल पर होगा। मतलब प्रक्रिया को डिजिटल और शायद आसान बनाने की कोशिश है। ठीक है, अब जरा ग्रेच्युटी और मातृत्व लाभ की बात करते हैं। ग्रेच्युटी में वो 5 साल वाली शर्त तो बहुत कॉमन है, उसमें कोई बदलाव है? नहीं, वो जो 5 साल की लगातार सेवा वाली मूल शर्त है वो वैसी ही है। लेकिन हाँ, अगर सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो ये 5 साल की शर्त लागू नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और एक जरूरी सफाई दी गई है लगातार सेवा की परिभाषा में, खासकर मौसमी कर्मचारियों के लिए। उनके लिए गणना अब ज्यादा साफ होगी। और मातृत्व लाभ? उसमें आजकल क्रैच सुविधा पर काफी जोर रहता है। हाँ, मातृत्व लाभ की अवधि तो वही है, पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते और उसके बाद के बच्चों के लिए 12 हफ्ते। लेकिन क्रैच सुविधा में एक अहम बदलाव आया है। पहले क्या था कि 50 या उससे ज्यादा महिला कर्मचारी हों तो कंपनी को अपनी क्रैच बनानी पड़ती थी। हाँ, जो छोटे बिजनेस के लिए मुश्किल था। बिल्कुल। अब कॉमन क्रैच का कॉन्सेप्ट लाया गया है। कॉमन क्रैच मतलब कई कंपनियां मिलकर एक क्रैच चला सकती हैं, या फिर किसी सरकारी और निजी एजेंसी की क्रैच सुविधा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे छोटे व्यवसायों को निश्चित रूप से थोड़ी राहत मिलेगी। ये तो वाकई प्रैक्टिकल लगता है। अच्छा, अब कर्मचारी मुआवजे और सबसे बड़े वर्ग यानी असंगठित क्षेत्र के लिए क्या खास है? देखिए, कर्मचारी मुआवजा अब उन सभी पर लागू होगा जहां एसआई लागू नहीं होता। तो एक तरह से कवरेज का गैप भरने की कोशिश है। और विकलांगता को अब 3 श्रेणियों में ठीक से बांटा गया है: स्थायी, आंशिक, स्थायीपूर्ण और अस्थायी। अच्छा, इसका मतलब है कि मुआवजा तय करते समय चोट या बीमारी कितनी गंभीर है, इसका ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। और जो असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की फंडिंग कैसे होगी, ये हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। संहिता में प्रावधान है कि इनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई जाएंगी, और इनका पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और एग्रीगेटर्स ये तीनों मिलकर देंगे। एग्रीगेटर्स मतलब जैसे ऐप आधारित कंपनियां? जी हाँ, जैसे कैब सेवाएं देने वाली या फूड डिलीवरी वाली कंपनियां। इन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% तक योगदान देना होगा इस फंड में। ये 2008 के असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम से एक कदम आगे है, जहां सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात थी, अब फंडिंग का एक ढांचा बनाने की कोशिश दिखती है। ये एग्रीगेटर वाला योगदान तो काफी अहम है। अब जरा प्रशासन और नियमों के पालन की बात कर लेते हैं। क्या वो इंस्पेक्टर राज वाली जो चिंताएं रहती हैं वो कुछ कम होंगी? कोशिश तो कुछ ऐसी ही लगती है। एक नया पद बनाया गया है,
निरीक्षक सह सुविधाकर्ता। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। हाँ, मतलब इनका काम सिर्फ जांच करना नहीं होगा, बल्कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सलाह देना, उनकी मदद करना भी होगा। और अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो सीधे सजा या कार्रवाई करने से पहले कुछ मामलों में उन्हें सुधार का मौका दिया जाएगा, बशर्ते वो गलती पिछले 3 साल में न दोहराई गई हो। तो रवैये में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। लगता तो यही है, सलाह और सुधार पर जोर। और जिम्मेदारियों के मामले में क्या स्थिति है? खासकर जब काम ठेके पर दिया जाता है तब अक्सर उलझन होती है। अब पहले ईएसआई एक्ट में प्रधान नियोक्ता और तत्काल नियोक्ता जैसे शब्द थे, जिनसे थोड़ी कंफ्यूजन होती थी। अब संहिता में नियोक्ता और ठेकेदार, जिसमें उप ठेकेदार भी शामिल हैं, इनकी साफ परिभाषाएं दी गई हैं। इससे जिम्मेदारी तय करने में ज्यादा स्पष्टता आनी चाहिए। प्रशासन के लिए वही पुरानी संस्थाएं काम करेंगी, जैसे ईपीएफ के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईएसआईसी, और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये उभर रही है कि इस संहिता का लक्ष्य है सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना, खासकर नए तरह के वर्कर्स जैसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल करना। साथ ही 9 अलग-अलग कानूनों को एक करके प्रक्रिया को सरल बनाना, शायद कंपनियों के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी। हाँ, इरादा तो बिल्कुल यही लगता है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि इसको जमीन पर उतारना, लागू करना उतना आसान नहीं होगा। इसमें कई चुनौतियां हैं, जैसे कि खासकर असंगठित क्षेत्र और गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो योजनाएं बनेंगी, उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना और ये सुनिश्चित करना कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अभी भी कई नियम और प्रक्रियाएं बननी बाकी हैं, उनका सबको इंतजार है। तो देखना होगा कि एक कागज पर बने कानून असल में कितना असर दिखाते हैं। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सब, क्या ये नई संहिता गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में काम करने वालों के लिए वो जो लचीलापन होता है जिसके लिए वो अक्सर ये काम चुनते हैं, और दूसरी तरफ जो जरूरी सामाजिक सुरक्षा है, क्या इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बन पाएगा? ये शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ BV। हाँ जी, ये कोई छोटी गल नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸਨੇ EPF, ESI, ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ, 9 कानून। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਡ 'ਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ 9 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ EPF ਐਕਟ, ESI ਐਕਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਡ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਪ ਬੇਸਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ। ਕੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ PF, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ? ਹਾਂ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ। 26 ਹਫ਼ਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 26 ਚੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲਿਕ ਜਨੇਪੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਨਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆਖਰੀ ਲਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ 'ਚ 190 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 240 ਦਿਨ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੀਐਫ ਤੇ ਈਐਸਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਪੀਐਫ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਈਐਸਆਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਈਐਸਆਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਟਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ। ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, BOCW, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਤੇ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਸ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਵੀ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਾਰਜ-ਬਲ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡੇਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ जावे, हकीकत बने। आज हम हिंदुस्तान के नए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पर जरा तफसील से बात कर रहे हैं। हुकूमत हिंद ने हाल ही में 9 अलग-अलग लेबर कानूनों को इकट्ठा कर दिया है। जी बिल्कुल। उनमें प्रोविडेंट फंड, ESI, ग्रेजुएटी, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब अहम कानून शामिल थे। तो आज हम अपने जराये की बुनियाद पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नया कोड पुराने कानूनों से कितना मुख्तलिफ है, क्या बड़ी तब्दीलियां आई हैं और उनका असल मतलब क्या है। बिल्कुल। और देखिए, इस कोड का मकसद तो साफ नजर आता है। एक तो ये कि हिंदुस्तान में जो लेबर कानून का एक पूरा जाल बिछा हुआ था, उसको थोड़ा सुलझाया जाए, आसान बनाया जाए। और दूसरा, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाया जाए, यानी मुनज़्ज़िम शोबे के साथ साथ गैर मुनज़्ज़िम शोबे के कारकुनों को भी इसमें लाया जाए। और जैसा आपने कहा, पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात हुई है बाकायदा तौर पर। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये 9 कवानीन को एक जगह लाना सुनने में तो लगता है कि इंतजामी तौर पर काफी बेहतर हो जाएगा, लेकिन क्या जरा ये बताते हैं कि असल में, मतलब अमली तौर पर इतने बड़े अलग अलग निजामों को जोड़ने में क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? कहीं ये सिर्फ कागज पर ही तो सादगी नहीं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। देखें, मकसद तो बुनियादी तौर पर तामील यानी कंप्लायंस को आसान बनाना है, लेकिन जराए इशारा करते हैं कि जाहिर है इतने मुख्तलिफ सिस्टम, डेटाबेस, इंतजामी ढांचे, इन सबको इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा पेचीदा काम तो होगा। ठीक। अच्छा, एक और जो बुनियादी तब्दीली है वो है उजरत यानी वेजेस की एक जैसी तारीफ। ये अब तमाम लेबर कोड्स पर लागू होगी। पहले क्या था कि अलग अलग कानून में उजरत की तारीफ थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती थी। ओह अच्छा। जी, इससे काफी उलझन होती थी, खासतौर पर जब PF कटना है या ग्रेजुएटी देनी है तो हिसाब कैसे लगेगा। तो ये जो एक जैसी तारीफ है, इससे वो इबहाम, वो कंफ्यूजन दूर होगा। क्या जराए बताते हैं कि माजी में इस फर्क की वजह से क्या मसले होते थे? जी बिल्कुल, जराए यही बताते हैं कि पहले बहुत बार झगड़े खड़े हुए इस बात पर कि कौन सा अलाउंस उजरत का हिस्सा माना जाएगा, कौन सा नहीं। तो ये जो यकसा तारीफ आई है, इसका मकसद यही है कि ये कंफ्यूजन, ये तनाजुआत खत्म हो। सही। उससे फिर ग्रेजुएटी और दूसरे फवाइद का हिसाब किताब ज्यादा शफाफ, ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा और इसका सीधा असर मुलाजिम को मिलने वाली रकम पर पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई उजरत की बात। अब आते हैं उन नए दौर के कारकुनों पर, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जराए तो कह रहे हैं कि ये कोड इनके लिए एक संग मील है, लेकिन क्या ये सिर्फ तारीफों तक ही है या वाकई कोई ठोस हिफाजती ढांचा भी दिया जा रहा है? हाँ, ये अहम सवाल है। कोड में पहली बार बाकायदा तारीफें शामिल की गई हैं। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, एग्रीगेटर, ये सब। इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है आधार की बुनियाद पर, सेल्फ डिक्लेरेशन। अच्छा। और अहम बात यह है कि इनके लिए अलग से सोशल सिक्योरिटी फंड्स और स्कीमें बनाने का भी जिक्र है, जिसमें आजर यानी एग्रीगेटर वो भी हिस्सा डालेगा। लेकिन यहाँ जराए एक सवाल ये भी उठाते हैं कि इन फंड्स में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। खास तौर पर उन वर्कर्स की आमदनी तो मुस्तकिल नहीं होती ना, कभी कम कभी ज्यादा। हाँ, ये तो है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा? ये एक चैलेंज है जिसका हल अभी तक पूरी तरह वाज़े नहीं है। यानी नीयत तो अच्छी लग रही है, लेकिन अमल दरामद में पेचीदगियां हो सकती हैं। अच्छा, अब ग्रेजुएटी पर आते हैं। खास तौर पर फिक्स्ड टर्म मुलाजिमीन, यानी जिनकी नौकरी एक मुअय्यना मुद्दत के लिए होती है, उनके लिए क्या बदला है? जी, फिक्स टर्म मुलाजिमीन के लिए ये एक बड़ी और अच्छी तब्दीली है। अब उन्हें नौकरी की मुद्दत के तनासुब से यानी प्रो राटा बेसिस पर ग्रेजुएटी मिलेगी, चाहे उनकी नौकरी 5 साल से कम ही क्यों ना रही हो। ओह, पहले तो 5 साल की शर्त थी ना? बिल्कुल, पहले कम से कम 5 साल मुसलसल काम करना जरूरी था। तो इस तब्दीली से जो लोग मुख्तसर मुद्दत के लिए काम करते हैं, उन्हें भी कुछ माली तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। और एक और चीज, आजर पर अब ये लाजिम होगा कि ग्रेचुटी जब वाजिबुल अदा हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका हिसाब किताब करके अदायगी का बंदोबस्त करें। अगर देर होती है तो सूद भी देना पड़ेगा। अच्छा,
यानी कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। जी, कोशिश यही लगती है कि तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ठीक है। और ज़च्चगी के फ़वाइद, मैटरनिटी बेनिफिट्स, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नज़र आई या वही पुरानी सहूलियात हैं? बुनियादी तौर पर तो वही है। कोविड 26 हफ्तों की तनख्वाह के साथ ज़च्चगी की छुट्टी की तस्दीक करता है, जिसमें से 8 हफ्ते आप मुतवक्का डिलीवरी से पहले ले सकती हैं। ये पहले से मौजूद कानून की ही तौसीक है। ठीक। अलबत्ता एक मेडिकल बोनस है 3,500 रुपए तक का। ये तब मिलेगा अगर आजर मुफ्त तिब्बी देखभाल नहीं देता। और एक और अहम बात, अगर किसी इलाके में 10 या उससे ज्यादा कारकुन हैं, तो वहाँ क्रैश यानी बच्चों की देखभाल का मरकज बनाना लाजमी होगा। ये क्रैश वाली शर्त तो काम करने वाली माओं के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और आखिर में वो तबका जो हिंदुस्तान की वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी गैर मुनज़्ज़म शोबा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनके लिए इस कोड में क्या खास है? क्या ये कोड वाकई उन तक पहुंच पाएगा? देखें, गैर मुनज़्ज़म शोबे के लिए एक मुनज़्ज़म ढांचा बनाने की कोशिश तो जरूर नजर आती है। कौमी और रियासती सतह पर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स बनाने की बात है। उन कारकुनों के लिए मखसूस फलाही स्कीमें लाने का जिक्र है, जैसे सेहत, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तालीम, स्किल डेवलपमेंट, बुढ़ापे का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। रजिस्ट्रेशन का भी एक आसान तरीका बताया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, जिसमें एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा यूनिक शनाख्ती नंबर के साथ। अच्छा। और मालूमात और मदद के लिए टूल फ्री हेल्पलाइन या कॉल सेंटर बनाने का भी जिक्र है। तो कागज पर तो ये सब बहुत मुतासिर कुन लगता है। तो अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो ये कोड सोशल सिक्योरिटी के दायरे को फैलाने, कानूनों को जदीद बनाने, आसान करने की एक बहुत बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी कोशिश है। बिलाशुबहा नियत और अहदाफ तो बहुत बुलंद है, लेकिन जैसा हमने बातचीत में भी देखा और जराए भी इसी तरफ इशारा करते हैं, असल इम्तिहान इसके निफाज का है। बिल्कुल। क्या ये इतना वसी और जामा कोड खास तौर पर लाखों गैर मुनज़्ज़म गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जमीन पर भी उतना ही मुअस्सर साबित होगा जितना ये कागज पर लग रहा है? वो जो इंतज़ामी रुकावटें हैं, अमली चैलेंजेस हैं, जो मादी में भी लेबर कावानीन के निफाज में सामने आते रहे हैं, क्या इस बार उन्हें दूर किया जा सकेगा? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा, और उसी पर इस कोड की असल कामयाबी मुनहसर है। Welcome to the Deep Dive, where we take a stack of sources and cut straight to the core of what you need to know. Today, we're tackling something huge in India's labor world. The Code on Social Security 2020. Absolutely. And huge is the right word. This isn't just tweaking old rules, it's a massive consolidation. We're talking about one single code replacing 999I major laws. Things like Provident Fund, ESI, gratuity, maternity benefit, the cornerstones, really. Yeah, 9 laws. Okay, so our mission here is to cut through all that legal text. We've sifted through government websites, expert articles, legal takes, even audit reports. We want to lay out the key changes compared to the old ways, what it actually means if you're working in India, and why this is such a big deal. Ready to dive in? Let's do it. I think to really get this code, you first have to understand the why. What problems was it trying to fix? Our sources really point to this long-standing challenge. Yeah. Getting Social Security to everyone, especially in India's massive informal sector. It's always been tricky. Informal sector? You mean like workers without a standard single employer, or people moving around for jobs? Exactly. Think street vendors, construction workers, domestic workers, people in agriculture, providing consistent benefits like pensions or health cover under the old fragmented system. Very, very difficult. Yeah, and we saw some hard evidence of that, didn't we? There was that audit report on construction worker welfare fund. Oh, right. That was quite revealing. It found all sorts of issues under the old setup, like no central database, different places collecting the money, the cess in totally different ways, not much checking if the money was used right. And real problems tracking migrant workers, who are a huge part of that workforce. It just showed a system struggling. That's it. So the new code, the big idea is to clean that up, a unified approach. Precisely. It's about streamlining everything, how workers get registered, how contributions are collected, how benefits are paid out. And crucially, it's trying to stretch that social safety net way beyond the traditional 9-to-5 single employer job that the old laws mostly focused on.
Okay, and this is where it gets really forward-looking, right? I saw one source suggest this Indian code might even be a kind of global test case. It's a fascinating point. The idea is if India can figure out how to provide social protection pensions, health benefits, separate from a traditional job contract, well, that could change how we think about work and welfare everywhere, especially with the rise of non-standard work globally. That's a big thought. Okay, so who is actually covered now? That seems like the core change. It is. A major goal is bringing informal sector workers into the formal system, giving them access to Social Security. And that includes specific provisions for self-employed people too. But the headline grabber is the inclusion of gig and platform workers, isn't it? Absolutely. That's probably the most talked about part. It's the first time Indian law explicitly acknowledges these kinds of work arrangements in the context of Social Security. So how does the code define them? Is there a clear difference? Well, the code does define them. A gig worker is basically someone working outside a traditional employer-employee setup. Think freelancers, independent contractors. A platform worker is a type of gig worker who uses an online platform, an app, a website, to connect with customers and get work. Think ride-sharing drivers, food delivery workers. Okay. But interestingly, one source pointed out that while the definitions are there, the code doesn't seem to make a huge practical distinction between them when it comes to accessing Social Security schemes. So the main point is, these app-based jobs, this flexible work, it's now officially on the Social Security map in India. That's the intention, yes. It's potentially bringing millions of workers who are completely outside the old system into some kind of safety net. Feels like a seismic shift. Okay, so how does this play out in specific benefits? Let's compare old versus new. Maybe start with Provident Fund, the retirement savings. Right, PF. Under the old Employees Provident Fund Act, coverage was often limited. You had to be in a scheduled industry or an establishment the government specifically notified. A bit patchy, perhaps? It could be. The new code simplifies this massively. Chapter 3, the PF part, basically applies to every establishment with 20 or more employees. Full stop. Every establishment, so much broader reach. Much broader. It removes that old industry-specific limitation. And there's also a provision allowing smaller places, those with fewer than 20 employees, to opt in voluntarily if the employer and most employees agree. Okay, clear expansion for PF. What about ESI, the employee's state insurance? That's health cover and sickness benefits, right? Yes. And a similar story there. The ESI chapter in the code also casts a wider net. It applies to every establishment except seasonal factories that employs 10 or more people. 10 or more, so a lower threshold than PF. Right. And again, it removes old ambiguities like wage ceilings for coverage, simplifying who's in and who's out. Smaller places below 10 can also join voluntarily. Any exceptions or special cases for ESI? Yes, a really important one. Establishments involved in hazardous or life-threatening work are covered by ESI, regardless of how many employees they have, even if it's just one person. Ah, that makes sense. Recognizing the risk. Okay, so broader coverage for both PF and ESI seems to be a clear theme. Let's switch gears to maternity benefit. What's changing there for working mothers? The code pretty much carries forward the core benefit from the 2017 amendments. That's the maximum 26 weeks of paid leave. Still 26 weeks, okay. And the rule about how much can be taken before the due date? That stays too. Not more than 8 weeks before the expected delivery date. But the code adds some important details and clarifications. Like, what are the key updates? Well, there's the creche facility mandate. If an establishment has 50 or more women employees, they must provide a creche. And the mother gets 4 visits a day. 4 visits, okay. Then there's the work from home option. After the 26 weeks of leave are up, there's a provision for working from home, but importantly, it's based on mutual agreement with the employer and if the nature of the work allows it. So it's not an automatic right, but it's formally recognized as a possibility. Exactly. And big news for adoptive and commissioning mothers. They now get 12 weeks of paid leave. That's a major step for inclusivity. That is significant. Anything else new? Yes, audible things. The code introduces a benefit for having a third child, which wasn't in the old 1961 Act. And there's a specific medical bonus up to 3,500 rupees payable if the employer doesn't provide the necessary prenatal and postnatal care themselves. Okay, so financial support if the care isn't directly provided. Right. And also, specific provision for 6 weeks leave with wages in the unfortunate event of a miscarriage or medical termination of pregnancy. It definitely sounds more comprehensive, covering more situations. Is there clarity on overlap, say, if someone is covered by ESI for maternity?
Yes, the code explicitly states that if a woman can get maternity benefits under the ESI chapter, she can't also claim the same benefit directly from her employer under the maternity benefit chapter. Avoids double payment. Makes sense. Okay, let's talk about employee compensation for workplace injuries or, tragically, death. What's the shift there? The big change here is in how the compensation amount is decided for death or permanent total disablement. The old act had fixed minimum sums written into the law: 1.2 lakh rupees for death, 1.4 lakh for permanent total disablement. Fixed amounts and the new code. It scraps those fixed minimums. Instead, it says the compensation will be the amount as may be notified by the central government from time to time. Ah, so the government can update the amounts through a notification without changing the law itself. Exactly. And one analysis we saw suggested this could actually be better for employees, as the government can raise the amounts more easily to keep pace with inflation or living costs. It adds flexibility. Interesting perspective. More dynamic. Any other additions to compensation? Yes, the code adds explicit reimbursement for the actual medical costs spent treating the injury. And it mandates funeral expenses at least 15,000 rupees or more if the state government sets a higher amount to be paid to the family or whoever incurred the cost if a worker dies. Those seem like very practical, necessary additions. And again, any overlap rule with ESI here. Same principle. If someone is eligible for disablement or dependent benefits under the ESI chapter, they can't claim compensation for the same thing under the employee compensation chapter. Prevents duplication. Got it. Okay, gratuity next. The end of service payment. What's new there? Clarity and timelines seem to be the focus. The code is very explicit. Employers must pay gratuity within 30 days of it becoming payable. 30 days? That's a hard deadline. What happens if they miss it? There's a penalty now, written right into the code. If they pay late after that 30-day window, they have to pay simple interest on the gratuity amount. Interest, okay. How is that calculated? The interest runs from the original due date until the date they actually pay. The rate can't be higher than whatever the central government notifies for interest on long-term bank deposits. So it's a real financial incentive to pay on time. And the formula for calculating gratuity itself, is that changing? The formula mentioned in the code, last drawn wages times 1526 times years of service, seems pretty consistent with how it was generally calculated before. The main upgrade is that strict 30-day deadline and the interest penalty for delay. That clarity on timing and the penalty seems like a definite plus for employees waiting for their dues. Anything else on PF or ESI specifics worth mentioning? Just a couple of operational points. For PF, the code makes it crystal clear that if a company hires contract workers, the main company, the principal employer, can recover the PF contributions they pay for those workers directly from the contractor. Clears up responsibility. Useful for companies using contractors. Definitely. And for ESI, the code basically bundles in procedures from the old act, like how authorities can recover unpaid EFI dues using a recovery officer. It also formally lists out injuries counting as permanent total disablement, loss of both hands, for instance, or a hand and the foot, and occupational diseases like lead poisoning or certain skin conditions. So putting existing rules and lists clearly within the new single code. Exactly, for clarity and consolidation. It also mentions the ESI Corporation can partner with local bodies or private hospitals to provide medical care and share costs with states. More flexibility in delivery. It really sounds like they tried to think through the practicalities too. You mentioned definitions earlier being important. Hugely important. They underpin everything. The definition of employer, for instance, is broadened. In some situations, it can now include entities that engage independent contractors, which is key to covering gig and platform workers. Right, connects back to that expansion of coverage. And the definition of wages has been revised and standardized across the different Social Security schemes. This was a big source of confusion and complexity before, having different wage definitions for PF, ESI, gratuity. Now there's one core definition with specific inclusions and exclusions. That standardization is fundamental. So, from the big picture, covering more workers, especially informal and gig workers, down to these foundational definitions and clearer processes, it all ties together. We talked about the problems, like those audit findings on construction cess. How does the code try to directly address those implementation issues? Well, by creating that single unified framework, the hope is to overcome those very problems. The code has specific sections detailing, for example, how cess for building workers should be collected, assessed, and managed. It lays out clear penalties for non-compliance across the board and defined processes for appeals.
The idea is that centralization and standardization through things like common registration systems, potentially using Aadhaar, will improve data collection, reduce inconsistencies, and make it easier to track workers, including migrants, and ensure they get their benefits. So it's trying to build a more robust administrative backbone for the whole system. That seems to be a core part of the ambition, yes. Yeah. Fix the plumbing, so to speak, to handle the expanded scope. This has been incredibly insightful. We've really unpacked the layers of this new code on Social Security. Yeah, it's clear it's a landmark piece of legislation, a huge effort to consolidate, modernize, and significantly expand India's social safety net. Bringing in gig, platform, and more informal workers is potentially transformative. Absolutely. So, wrapping up, we've seen the code's ambition. Wider coverage, updated benefits, streamlined processes. But considering the sheer scale of India's workforce, the diversity, the mobility, particularly in those informal and gig sectors, here's a final thought for you. How effectively will these new unified implementation mechanisms, the registration, the collection, the delivery systems outlined in the code, actually grapple with the very real, on-the-ground challenges of finding, identifying, and consistently supporting this vast and often transient workforce? Will the infrastructure keep pace with the legislative ambition? That's perhaps the biggest question mark hanging over this massive overhaul as it starts to roll out. नमस्कार। आज हम भारत सरकार की नई सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसने वो जो पुराने 9 कानून थे ना, ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी, मातृत्व लाभ वाले, उन सबको एक में मिला दिया है। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा कंसोलिडेशन है ये। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, लीगल एनालिसिस भी हैं और एक्सपर्ट्स की राय भी। तो कोशिश यही है कि समझें कि पहले क्या था और अब क्या बदला है, मतलब असल में फर्क क्या पड़ेगा। सही कहा। और ये कोशिश बड़ी महत्वाकांक्षी लगती है, मतलब कानूनों को आसान बनाना और कवरेज बढ़ाना। कवरेज बढ़ाना मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनको भी इसके दायरे में लाना। हाँ, ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स वाला मुद्दा तो काफी नया है। बिल्कुल, पर देखना यह है कि ये सब जमीन पर कैसे उतरता है ना? अच्छा, तो ये 9 कानूनों को एक में लाना, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सरलीकरण है या कवरेज बढ़ाने पर ज्यादा जोर है? क्या लगता है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। संहिता ने कर्मचारी, नियोक्ता, इनकी परिभाषाएं थोड़ी बदली हैं, उनका दायरा बढ़ाया है। पर सबसे बड़ा बदलाव, जैसा आपने कहा, वो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को पहली बार डिफाइन करना है। हाँ। उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाने का प्रावधान है, पर ये अभी उतना साफ नहीं है कि उनको सीधे ईपीएफ या ईपीएस जैसी जो स्थापित योजनाएं हैं उनमें कैसे लाया जाएगा। अच्छा। पुराने कानूनों में तो वो सीमाएं थी ना, सैलरी की या कंपनी में कितने लोग हैं, उस आधार पर कवरेज मिलती थी। हाँ, वो थ्रेशोल्ड वाली बात। जी, नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कहा भी था कि यह हटनी चाहिए, पर संहिता में भी ये पूरी तरह हटी नहीं है। तो ये जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनको पहचान तो मिल गई, पर सुरक्षा कैसे मिलेगी? क्या कोई ठोस प्लान है? यहीं पर असली सवाल है। असल में कोड कहता है कि इनका रजिस्ट्रेशन होगा शायद आधार के जरिए। ओके। और केंद्र सरकार इनके लिए खास स्कीम्स बना सकती है। बना सकती है मतलब अभी बनी नहीं है? नहीं, अभी फ्रेमवर्क है। फंडिंग कहाँ से आएगी, ये भी कई विकल्प हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, या फिर वो कर्मचारी खुद या उनका एम्प्लॉयर, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सीएसआर फंड से भी। अच्छा, सीएसआर से भी। हाँ, तो फंडिंग का स्रोत अभी पक्का नहीं है और इनकी मदद के लिए सुविधा केंद्र बनाने की भी बात है। तो ये 2008 वाले असंगठित श्रमिक कानून से तो बेहतर लगता है। हाँ, उस लिहाज से तो ये आगे का कदम है, पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखना होगा। और जो पुराने फायदे थे, जैसे ग्रेचुइटी है, मैटरनिटी बेनिफिट, कर्मचारी मुआवजा, उनमें क्या हुआ? वो सब बने हुए हैं, मतलब मूल लाभ वैसे ही हैं, बस अब सब एक कोड के अंदर आ गए हैं। अच्छा। ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन वही है, हर साल के 15 दिन की सैलरी। मैटरनिटी बेनिफिट में कुछ नई चीजें हैं, जैसे अडॉप्शन या कमिश्निंग मदर के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी। हाँ, ये सुना था। और 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो क्रैश सुविधा जरूरी होगी। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी है। ओके, मतलब फायदे बरकरार हैं, बस एक जगह आ गए। हाँ, एक तरह से इंटीग्रेट हो गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस कंपनियों के लिए क्या बदला है? आसान हुआ है या मुश्किल? कोड में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन पर जोर है और शायद रिटर्न फाइलिंग भी इंटीग्रेटेड हो जाए। तो ऑनलाइन सब। हाँ, उम्मीद है इससे कागजी काम कम होगा। जो पहले से रजिस्टर्ड है उन्हें दोबारा नहीं कराना। ये तो ठीक है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर नियमों का पालन नहीं किया तो पेनल्टीज बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, कितनी? वो तो डिटेल्स में देखना होगा, पर हाँ, सख्ती बढ़ाई है। और जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे EPFO, ESIC और रिकवरी ऑफिसर्स, उनकी पावर्स भी क्लियर की गई हैं। मतलब बकाया वसूली वगैरह के लिए? जी, प्रॉपर्टी अटैचमेंट तक की पावर है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश है, पर साथ में सख्ती भी। तो अगर हम इसे समेटें तो ये कोड कानूनों को एक साथ लाता है और कवरेज बढ़ाने की कोशिश करता है, खासकर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। हाँ, कोशिश तो यही है, एक अहम कदम है। पर जैसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी को पूरी तरह यूनिवर्सल बनाने का जो लक्ष्य है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। सही। और ये प्रावधान कागज पर तो आ गए, पर जमीन पर कैसे लागू होंगे, खासकर इतने बड़े असंगठित क्षेत्र के लिए, वो असली चुनौती है। क्या वाकई में मजदूरों की जिंदगी में सुधार आएगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है कि क्या ये सब भारत के वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने में मदद करेगा, या ये बस नियमों का एक और जाल बन जाएगा जिसका असल असर कम हो? सही बात है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल, आगे देखने लायक विषय है ये। स्वागत है जी। आज ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं समाजिक सुरक्षा कोड 2020 दी। ये एक ਵੱਡਾ ਬਦਲਾव है ना? हाँ जी, बिल्कुल। एक कोड जिसने 9 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। EPF, ESI, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਖ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ 9 ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ESI ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ESI ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈ ਉਹ ਹੈ ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ, ਨਾਲੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CSR ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। EPF ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? EPF 'ਚ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਯਾਨੀ 1952 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ EPF ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂ? ਲਗਭਗ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਠੀਕ, ਪਰ ESI 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ESI ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਡ ਹੁਣ ESIC ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਖੈਰ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਹੁਣ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਯਾਨੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ, ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਨਸ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁਫਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੋਨਸ? ਫਿਲਹਾਲ 3500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ। 80 ਦਿਨ, ਠੀਕ। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 80 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਤੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ EMPLOYEES ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਐਸੇ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸੱਟ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 50% ਜਾਂ 75% ਭਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ? ਵੇਖੋ, ਅਸਲ ਪਰਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। Okay, let's dive into this stack of sources we've got. We're looking at India's socioeconomic scene, specifically the big changes around labor laws and Social Security. That's right. Our goal here is really to pull out the most important pieces, the key takeaways about these reforms, especially this code on Social Security, 2020. What does it actually mean for workers? Well, the first thing that jumps out from these sources is just the sheer scale of ambition. They're looking to simplify, a lot of old laws. How many are we talking about? Potentially replacing around 29 existing central labor laws with just 4 codes. It's a massive consolidation effort. Wow. And the code on Social Security is, absolutely central to that. The idea seems to be twofold. Give employers a bit more flexibility, but also significantly broaden the reach of Social Security and minimum wages. Right, and that broadening seems so necessary. The sources really highlight how many workers, especially in the unorganized sector, were previously left out. Exactly. There's even mention of ancient ideas of Social Security being linked to these modern efforts to cover everyone. You see quotes emphasizing the need to include the self-employed too. So it's catching up with the modern workforce. It really tries to. For the first time, this code actually defines terms like aggregator, gig worker, and platform worker legally. So bringing them into the fold officially. Precisely. There was the Unorganized Workers Social Security Act before, but this new code aims to be much more integrated, much more comprehensive for these newer ways of working. Okay, so it's widening the net.
But what about the actual benefits, like compensation if someone gets injured at work? Are those details changing much? Yes, that's a really interesting point raised in the sources. The old law, the Employees Compensation Act from way back in 1923, had specific minimum amounts set, like 1.2 lakh rupees for death, 1.4 lakh for total permanent disability. Right, fixed numbers. The new code changes that. It now says compensation will be an amount as may be notified by the central government from time to time. So it's flexible, which could be good. It could mean higher amounts later, definitely. But the key thing the sources point out is that the specific number isn't baked into the code itself anymore. It depends on future government notifications. So there's a bit of uncertainty there for now. That's a crucial detail. Yeah. Okay, what about gratuity? That payment people get after years of service. Gratuity is definitely covered. The provisions look pretty similar to the old Payment of Gratuity Act, 1972. So 15 days wages for each year of service, or part of a year over 6 months. And the definition of employee for gratuity is quite wide, isn't it? Yes, it's designed to cover many kinds of work arrangements, though members of the armed forces are specifically excluded, as you'd expect. And eligibility often depends on continuous service, right? How's that defined now? Yeah, continuous service is spelled out. Typically, it means working a certain number of days a year, usually 240 days, but it can be fewer depending on the industry or if it's seasonal work, and employers have to pay it within 30 days of it becoming due. If they're late, interest applies. Got it. Okay, moving beyond compensation and gratuity. What about things like maternity leave or maybe childcare support? Maternity benefits are in there, covering leave entitlements, including for miscarriages. But one really interesting nugget the sources highlight is this idea of a common creche facility. Oh, how does that work? Instead of only very large companies having to provide their own creche, establishments now have the option to use or kind of pool resources for facilities run by the government, or maybe a local municipality, or even private providers. So more options, potentially making it easier for smaller places. Potentially, yes. And employers also have to tell women employees about these benefits right when they're hired. There's a medical bonus mentioned too. Okay, so the code seems to broaden who's covered. It tweaks some benefits, adds new options like these common creches. But the big question is always enforcement, isn't it? Across such a huge, diverse economy. Absolutely. And the sources do mention past audits of other schemes finding issues, data problems, verification weaknesses. It's a massive challenge. So how does the code try to tackle that? It introduces this new role, the inspector cum facilitator. The name itself is interesting. Facilitator, not just inspector. Exactly. The idea is they're not just there to patch violations and impose penalties, they're also supposed to advise employers and workers on how to comply. And crucially, the code says that before starting prosecution, this inspector cum facilitator generally has to give the employer a written chance to fix the problem first. Unless it's a repeat offense, I assume. Unless it's a repeat offense, yes. So it signals a shift, trying to blend facilitation with traditional enforcement. The framework also talks about using electronic inspections, web portals for data, things like that. And penalties are still there if needed. Oh, yes, definitely. There are detailed provisions for penalties for non-compliance, including rules for compounding offenses and different percentages depending on if it's the first time or a recurring issue. Okay, so let's try and pull this all together. What's the main takeaway from this deep dive into the sources? I think it clearly shows a major legislative push in India. The aim is to build a much wider social safety net, really trying to bring in workers who haven't traditionally been covered, especially with the rise of the gig economy. It gets into specifics on benefits, and it introduces new ideas for enforcement. It really does. Which leaves us, and you, with a big question to think about. This is a comprehensive piece of legislation, no doubt. But given the sheer scale and diversity of India's workforce, how effectively can these changes translate into real, tangible benefits and truly widespread coverage on the ground? That's something we'll all need to watch as it rolls out. So you've got this pile of stuff, articles, laws, reports, audits, all on India's labor laws. How do you even start to cut through all that noise and figure out what really matters? It's a real challenge today, isn't it? Just swimming in information and trying to find those core insights, the stuff that actually impacts people, buried in all the legal text and data. Exactly. Yeah. So, well, that's what we do here. Welcome to the deep dive. You bring us the sources. We help pull out the essential knowledge just for you. Right. We sift through it, find the key facts, maybe some surprising bits, the context you need, so you see the big picture the sources are painting without getting totally bogged down. And today,
That picture is, well, it's a really big one. We're diving into this huge transformation happening with India's labor laws and social security, especially looking at how they're trying to build safety nets for a workforce that's changing incredibly fast. You know, the informal sector, gig workers, platform workers. And the sources we have are pretty diverse for this one. Yeah. We've got bits from the new labor codes themselves, like the Social Security Code from 2020, Okay. but also pieces of older laws, like the Sin Workers Welfare Fund Act from way back in 81, or the Payment of Gratuity Act from 72, gives you that contrast. Right, old versus new. Plus, we've got these audit reports, which can be really revealing, government briefings, articles, analyzing the whole thing, the challenges, the implications. So our mission for this deep dive, wade through all this, pull out the crucial bits, and help you understand what these massive changes actually mean for workers, for businesses in India. And honestly, these aren't just Indian issues. The whole world is trying to figure out how work is changing. So there are lessons here for everyone, I think. Good point. Okay, let's start with the foundation, Social Security. The sources stress this isn't some brand new idea. Not at all. The basic concept, making sure ordinary people can meet their essential needs, it's ancient. One source even quotes Union Minister Dr. Mandavia referencing Chanakya. Yeah, highlighting this long historical view, you know, the idea that the people at the bottom, those below the poverty line, they deserve support for a decent life. It's framed as this continuous human thing. And the sheer scale in India makes this effort just immense. Some sources talk about the population dynamics, high birth rates, high death rates compared to industrialized countries. It puts the numbers into perspective. And despite that huge scale, the sources do point to real progress in expanding social protection. The ILO's World Social Protection Report, the latest one, says India basically doubled its coverage. From what? From about 24.4% to 48.8%. That's a huge jump. Wow. That is massive. And the actual numbers are just staggering, aren't they? Something like 65% of the population? Yeah, roughly 920 million people now covered by at least one central government scheme. It's actually boosted global social security coverage by 5% just from India's progress. So it really underlines this core idea in the sources. Social security is fundamental, especially for the poor, the vulnerable. And there's a clear call in the material to make sure self-employed people are included too. Right, because work isn't just a 9-to-5 job anymore for so many. Exactly. Okay, so that's the why. Social security is vital. Now, how are these sources showing India is trying to update how it delivers this for today's world? That brings us to the new labor codes, yeah. Absolutely. This is the big legislative overhaul. India took, 29 existing labor laws? 29. Yeah, quite the tangle, and consolidated them into just 4 big codes. You've got wages from 2019, Social Security from 2020, Occupational Safety and Health, OSH, also 2020, and Industrial Relations 2020. And the stated goals are pretty clear. Make compliance easier, improve worker protection, make it easier to do business, basically create a more rational legal system. Right, get rid of that old, fragmented patchwork. And the code on Social Security COSS 2020, that one, really stands out in the sources. It's seen as a major step, maybe even pioneering, towards being more inclusive. What makes it so different? Well, one of the most striking things is how COSS 2020 tries to change the whole basis for social protection. It's trying to, decouple it from that traditional idea of an employer-employee relationship. Ah, okay. That is a big shift. It is. And it's crucial if you want to cover people in non-traditional work. Some sources even suggest this could be a kind of blueprint for other countries looking at how to regulate the future of work. And these new ways of working, they're explicitly mentioned in the codes. I saw COSS 2020 actually defines terms like aggregator, gig worker, platform worker for the first time. Precisely. A gig worker is defined as someone doing work outside that traditional relationship, earning from it. Okay. And platform work involves using an online platform to connect people or businesses for services, again, outside the usual employer structure. So the law is finally catching up with the reality of the digital economy, which is huge in India. There's a Niti Aayog report mentioned projecting, crore workers soon? Yeah, 1 crore, or 10 million. Platform workers projected by 2024-25 growing to maybe 2.35 crore, 23.5 million by 2029-30. And India is already a massive player globally in this space, like 20% of the web-based platform workforce serving the global north. Huge numbers. Okay, so let's get specific.
What kind of provisions in these codes actually extend benefits? You mentioned gratuity earlier. Right. Gratuity is a good example. The definition is wider now. It covers all employees, including fixed-term contract workers and maybe even gig workers down the line. Okay. And the key thing for those fixed-term employees, they get statutory benefits, like gratuity, on a pro rata basis. They don't need that typical 5 years of service you see in the older 1972 Act. That removes a big barrier. It does. And employers have clear rules. Calculate and tell the employee the amount within 30 days of it being payable and pay interest if they're late. What about things like maternity benefits? Also updated. For places with 10 or more employees, women get up to 26 weeks of paid benefit, as long as they worked at least 80 days in the preceding year. Okay, 80 days. Yeah. And there are rules about how much leave can be before the due date. Plus, it includes a medical bonus if the employer doesn't provide prenatal care, specific leave for miscarriage or termination, and extra leave for illness related to the pregnancy. Importantly, the codes make it punishable to fire a woman just because she's on maternity leave. Good. And compensation if someone gets hurt at work. Employees' compensation, yeah. Employers are liable if someone dies or gets seriously injured during employment. That includes occupational diseases if they've worked there for at least 6 continuous months. Right. The sources mention specific calculation rates like 50% of monthly wages for death, 60% for permanent total disability, and employers have to notify the authorities about accidents. Now, what about that huge informal sector and the gig workers? How do the codes try to bring them into the fold? That's where the Social Security Code gets specific again. It allows the central government to set up dedicated Social Security funds just for unorganized workers, platform workers, and gig workers. Okay, dedicated funds. Where does the money come from? Various places. Government contributions, maybe contributions from the workers themselves or their employers or the aggregators. Even CSR funds, corporate social responsibility money. And a big part of reaching them is just knowing who they are. Right. Registration. Exactly. Formalization is key. The government's pushing registration hard. There's a pilot going on registering platform workers and aggregators on this portal called eShram. eShram. I've heard of that. Yeah, it's meant to be this one-stop shop for unorganized workers to access hundreds of different welfare schemes, central and state ones. Apparently, over 300 million workers are already registered. 300 million. It's a massive number. And the plan, mentioned in Budget 2025, is to scale this up significantly. Getting registered is pretty simple. Self-declare, you're an unorganized worker, be over 14, you get an identity card. And connected to that, I saw mentions of portable benefits for gig workers. What's that about? That's a really interesting idea gaining traction. The concept is that a gig worker could carry their Social Security benefits, maybe things like health insurance or pension contributions with them from one platform job to another. So it's not tied to one specific platform. Right. Maybe it accumulates in a personal account, perhaps linked to that eShram ID. It tackles that issue of gig work being fragmented, people switching platforms often. Okay, this all sounds, well, incredibly ambitious and forward-thinking on paper, but the sources also flag some issues, don't they? They do. A key point is that even though these laws were notified, passed a few years ago, the main substantive parts are mostly not actually in effect yet. Really? Why not? Yeah. If the central laws are passed, what's the holdup? A big bottleneck, according to the sources, is the states. The central codes are like the main blueprint, but the individual states need to frame and notify their own detailed rules for how it all works on the ground. How registration happens, how funds are managed locally, all that detail. And many states just haven't done that yet. Exactly. The framework is there, but the local instruction manuals aren't finished everywhere. Okay, that makes sense. Are there other hurdles? Yeah, there's also some resistance mentioned. Trade unions worry that some worker protections might get weakened in the process. Employers are, perhaps understandably, concerned about new compliance costs. And I imagine just the practicalities are tough. For sure. Things like needing a robust nationwide digital infrastructure to manage all this, trying to harmonize these new codes with lots of existing state laws, and just getting clear interpretations of some of the new provisions. We actually have a really concrete example of these kinds of implementation challenges in the sources, right? That audit report. Yes, the audit of the building and other construction workers' welfare scheme in Tamil Nadu, the TNCWWB, it gives a really granular look at how things can go wrong between the law being passed and benefits actually reaching people. Okay, let's unpack that. What was the audit trying to find out? They were checking the whole life cycle of the funds, the cess, a tax collected on construction costs.
Was it calculated right? Collected properly? Sent to the welfare board? Paid out correctly? Right. They also looked at worker registration. Were the right people signed up? And were the benefits, like scholarships or accident compensation, actually being delivered effectively? And what did they find? Was it working smoothly? Far from it, actually. One huge finding was the lack of a centralized database. They couldn't properly track cess collection, the revenue coming in, the payments going out. So they didn't have a clear picture of their own money flow for the scheme. Basically, no, which makes it incredibly hard to know if the right amount is coming in or if it's being remitted on time. What else? They found massive inconsistencies in how different local authorities were even estimating the construction costs when issuing building permits. And that estimate determines the cess amount. Exactly. So different methods meant widely varying cess amounts. It undermined the whole revenue base. Inconsistent inputs, inconsistent results. Makes sense. And then the welfare board itself, the TNCWWB, apparently had no mechanism to verify the amounts the local body sent them. They just accepted it. Wow. So no checks and balances on the money coming in. Seemingly not much control there. And the audit found cases where local bodies held onto the cess money or used it temporarily for other things instead of sending it straight to the welfare board. That sounds like a direct recipe for delays and maybe funds not reaching the workers they're meant for. It certainly creates irregularities. And then there were major data problems, huge discrepancies. Like the state's main labor portal showed 1.3 lakh migrant workers registered. Okay. But the TNCWWB's own data only had about 7,300 of those migrant workers from other states. A massive gap. So workers known to one part of the government might be invisible to the welfare board meant to help them? It certainly makes targeted benefit delivery very difficult. The audit also noted some gaps where state rules didn't quite align with Central Act intentions, like lacking a minimum membership period for benefits. And maybe most strikingly, during COVID, records showed 1.45 lakh dry ration kits were given out to migrant workers. But the audit found the TNCWWB itself kept no data on who received this aid within its own system. Wow. Help was given, but the board responsible didn't track it. That really drives home the data challenge. It really does. So the audit recommendations were pretty direct. Centralize the cess collection, create unified databases, standardize the calculation methods, tighten up oversight, fix these fundamental plumbing issues. So that audit paints a sobering picture of implementation. To try and ensure compliance, presumably the new codes also have stronger enforcement, penalties and things. Yes, the sources mentioned that. There are increased penalties for non-compliance in areas like wages. The Social Security Code also introduces something called compounding for certain first-time offenses. Compounding, what's that? It basically allows an employer, for certain violations, to pay a set fine, like 50% or 75% of the maximum penalty, instead of going through a full prosecution. Ah, okay. A way to settle minor offenses quickly, maybe. Potentially, yeah. But it still underlines that employers really need to get up to speed. The sources list key compliance steps. Register properly, keep good records, report accurately, train staff, do internal checks, review policies against the new codes. And thinking about who needs these protections. One source makes an interesting point about trade unions. Right. It mentions the challenges traditional unions face: lots of short-term workers, diversity making organizing hard, poverty limiting members' ability to pay fees, sometimes relying on outside leaders. So the argument is? The argument is that these weaknesses make a strong, government-mandated legislative safety net even more critical, especially for workers who might not get effective protection through unionization alone. Okay, let's zoom out for a second. These big labor law changes, they don't exist in a vacuum, do they? They connect to India's longer history of tackling huge socioeconomic issues? Absolutely. The sources kind of nod to this broader context. Earlier debates about economic policy, managing currency, the massive challenge of population growth in India was actually unique in putting family planning into its national plans early on. Right. And deep discussions about how the central government and states should share financial power about state-level planning. So it's part of this ongoing story of a huge, complex country trying to manage massive change through policy. Exactly. Ambitious goals, big hurdles, constant need to adapt. That's the pattern. So bringing it back to today's deep dive, why should you, our listener, care about all this detail on Indian labor law reform? Well, even if you're nowhere near India, the core problems here are pretty universal, aren't they? How so? Think about it. Trying to bring informal workers into the formal system, extending Social Security to gig workers, making sure huge government programs actually work on the ground.
balancing worker rights with business needs. Every country is wrestling with these as work changes. So this dive gives you a real-world case study. Exactly. A factual look at how one massive, diverse country is tackling these universal challenges. You see potential solutions like portable benefits or these digital platforms like eShram. But you also see the pitfalls. Oh, yeah. That audit report is a stark reminder of how hard it is to turn laws into reality on the ground. The gap between policy intent and actual delivery. So we've journeyed from this ancient idea of social security through India's really ambitious new legal framework for modern work. And landed right in the middle of the messy, complicated reality of implementation. Especially for vulnerable workers in places like construction or that fast-growing gig economy. It's clear from the sources that India has made big strides. Coverage is up, the legal foundation is being modernized. Definitely progress. Yeah. But the success of this whole massive transformation really hinges on nailing that implementation piece. Coordination between center and states. Fixing those data and monitoring gaps we saw in the audit. And just making sure everyone, workers, employers, actually understands the new rules. Yeah, it's a huge undertaking. And looking forward, as work everywhere keeps shifting towards flexibility, non-traditional jobs, India's experience really underscores that getting to universal social security isn't simple. No easy answers. It needs constant attention, adapting as you go, focusing relentlessly on making it work in practice. So the final thought to leave you with: what kind of creative solutions, maybe building on ideas like portability or leveraging digital platforms even more effectively, will be truly necessary to make sure every single worker, no matter how they work, is safeguarded in the future? Welcome to the Deep Dive. We're sitting here with, well, quite a stack of sources today, really pulling back the curtain on India's economic and social landscape. Specifically, we're looking at some really significant transformations happening around labor laws and social security. That's right. We've been sifting through quite a mix. Legal texts, government reports, some detailed briefing documents, various articles too. It gives a pretty deep look at recent reforms, a bit of the history, and crucially, the challenges that are, still very much there on the ground. Yeah, and our mission for this deep dive is pretty straightforward. We want to unpack the most important insights from all this material. We're aiming to understand sort of the why behind these big changes. Motivations. Exactly, and explore their potential impact on different kinds of workers. I mean, everyone from formal employees to the huge unorganized sector, and of course, the rapidly growing gig economy. And just as importantly, look at the practical hurdles. What's stopping these protections from becoming, a tangible reality for millions? Okay, let's start with the big picture then. What jumps out from the sources? Well, the most significant development they all highlight is the introduction of 4 major new labor codes. This is a massive consolidation effort, really designed to streamline, to simplify this tangled web of, 29 existing labor laws? 29, wow. And the sources list these new codes, right? We've got the Code on Wages, that was 2019, and then 3 from 2020. Social Security, Occupational Safety, Health and Working Conditions, OSH, and the Industrial Relations Code. That's the set. And the primary stated goals for this huge legislative overhaul, according to the sources, were pretty ambitious. Things like simplifying compliance for employers, aiming to actually enhance worker protections, and just generally improving the ease of doing business across India. The idea was, more coherent, modern, less fragmented legal structure for labor. That sounds like a huge undertaking, simplifying 29 laws into just 4. But what do the sources tell us about how this is actually going? Because I saw mentions that while they've been notified, the actual implementation seems to have hit some, pretty significant delays over the last 5 years or so. You're hitting on a really key point the sources emphasize. Yeah. Despite being on the books, getting these codes fully operational, it's been slow. Several critical factors are cited for these delays. A major one is the dependence on individual state governments. Ah, right. Labor's a concurrent subject in India, you see. So both the central government and the states need to frame and notify their specific rules under these new codes. And many haven't. Many states haven't finalized these,
which leads to this kind of piecemeal, non-uniform rollout across the country. Right, so it's not like flicking a single switch for the whole country. You need that state level action. Right. What else is slowing things down? Well, the sources also mentioned significant resistance from various stakeholders. You've got trade unions voicing concerns that maybe some provisions might dilute existing worker protections. Right. And then employers are, well, understandably cautious about potential new compliance costs and complexities, even with this stated goal of simplification. So it's that classic tension, isn't it? Worker rights versus ease of doing business sort of playing out again. Precisely. Plus, the sources also point to the lack of a fully centralized, integrated digital infrastructure. Yeah. I mean, to effectively manage and monitor compliance under these new codes nationwide, you really need robust systems, and that infrastructure just isn't fully in place yet. Right. Add to that the inherent complexities of just harmonizing regulations between the central framework and the specific rules in, 28 states and multiple union territories? You can see why implementation's been a challenge. Okay. Let's maybe hone in on one of these codes that the sources seem to give particular attention to, the Code on Social Security 2020. COSS, they call it. What makes this one stand out so much? Yeah, the COSS is highlighted as potentially quite groundbreaking, really because of its approach to social protection. What's fascinating here, and the sources dig into this, is its potential to actually delink Social Security benefits from that traditional, often rigid, employer-employee relationship. Delink. How so? Well, the sources suggest this move implicitly gives greater legitimacy to all these diverse and non-traditional work arrangements that are just becoming so much more common. So it's trying to build a social safety net that can actually catch workers outside the traditional formal job? Exactly. And this isn't a completely new idea in India. The sources do remind us of the historical context, going back at least to the Unorganized Workers Social Security Act of 2008. Right, I remember that one. Yeah, that earlier act did lay some initial groundwork for Social Security schemes aimed at the vast unorganized sector. Required registration. Basically, anyone aged 14 and up could self-declare, get an identity card, access certain specific schemes. So the new COSS is building on that foundation, but taking it quite a bit further, is that right? Much further, yes. The new Code on Social Security has this explicit focus on extending Social Security protections, not just to unorganized workers in the sort of traditional sense, but also specifically naming and including these newer categories of gig workers and platform workers. Okay, these terms are everywhere now, but it's important how the code defines them, right? Yeah. What do the sources say? Absolutely. The definitions are crucial for who gets covered. So the unorganized sector is defined as enterprises owned by individuals or self-employed workers, or those employing fewer than 10 workers. Pretty standard. Okay. An unorganized worker is defined really broadly, though. Could be a home-based worker, self-employed, a wage worker in that unorganized sector, or even, interestingly, someone in the organized sector who isn't covered by specific acts listed in the code. It covers a huge swath of informal work. Got it. And the newer types of work, gig and platform. Right. A gig worker is defined as someone who performs work or participates in a work arrangement outside of a traditional employer-employee relationship and earns from those activities. And platform work is described as a work arrangement where individuals or organizations use an online platform that's the key to connect for specific tasks or services in exchange for payment. Think, app-based jobs. Okay, so the code defines them clearly. How does it actually propose to provide Social Security to these incredibly varied groups? That seems like the tricky part. It does. The sources indicate that schemes designed specifically for these workers, unorganized, gig, platform, can cover essential benefits. Things like life and disability cover, health and maternity benefits, old age protection, even education benefits. And the funding. I remember seeing something interesting in the sources about the funding mechanism. It's not just the government paying for it all. That's right. And this is a really key insight from the code, I think. The funding for schemes specifically for unorganized gig and platform workers can come from a combination of sources. So yes, wholly or partly funded by the central government, state governments too. All right. Also corporate social responsibility, CSR funds. The beneficiaries themselves might contribute. And this is crucial, the aggregators. The aggregators, the platforms themselves, what's the detail about their contribution? That seems significant. It really is.
The sources specify that these aggregators are required to contribute somewhere between 1% and 2% of their annual turnover. 1 to 2% of turnover. Okay. But UP, there's a cap. This contribution is capped at 5% of the amount paid by the aggregator to their gig and platform workers through their platform. Ah, okay. So it's linked to turnover, but capped based on worker payouts. Exactly. And the code even lists specific types of aggregators covered, ride sharing, food and grocery delivery, content platforms, e-marketplaces, that sort of thing. So this isn't just welfare, is it? It feels like a regulatory attempt to actually link the revenue these platforms generate directly to the social security of the people generating it. That 1-2% of turnover, capped at 5% of payout, that creates a formal financial bridge. That feels like quite a shift in thinking based on these sources. It absolutely does. It's a formal recognition, really, that the platform is part of the work arrangement and, well, it has a responsibility, a role in the worker's social security. The sources also mention efforts to kind of integrate existing systems, too, like the potential for the ESI scheme employee state insurance to now link up with gig workers and those in the unorganized sector, trying to extend its reach. Right, and wasn't there a big government portal mentioned? eShram? Yes, exactly. The sources highlight the eShram portal as a key government effort here. It's intended as this kind of one-stop digital solution, facilitating access to various social security schemes. And according to the information we have, over 300 million unorganized workers have reportedly registered on this portal already. Wow, 300 million. Yeah, it's a massive undertaking. Really trying to create a database for this huge, often invisible, informal workforce. Okay, let's shift gears slightly. Let's pivot from the sort of broad strokes and the structure to some of the specific benefits detailed in the sources under these new codes. Maternity benefit is always a critical one. What does the code on Social Security actually lay out there? Right, maternity benefit. The code outlines the entitlement for women pretty clearly. So to be eligible, a woman needs to have worked for at least 80 days in the 12 months immediately before her expected delivery date. 80 days in the last year. Okay. Yeah, and the benefit itself is paid at the rate of her average daily wage for the period she's actually absent from work due to the pregnancy and birth. And what's the maximum period she can receive this benefit for? Is that specified? It is. The maximum period specified is 26 weeks. However, the sources clarified that no more than 8 of those weeks can be taken before the expected delivery date. Okay. There's also an exception. If a woman already has 2 or more surviving children, then the maximum period drops to 12 weeks, with no more than 6 weeks allowed before the expected delivery date. And protection against losing your job while you're on maternity leave, that's in there too, right? Yes, absolutely. The code makes it very clear that discharging or dismissing a woman employee during her maternity absence is unlawful. Full stop. Good. However, the sources also note there can be grounds for forfeiting the benefit in cases of gross misconduct, as defined by the central government rules eventually. Okay. Let's talk about gratuity next. Now, this is a benefit I think most people associate with long-term formal employment, right? But the new codes seem to be broadening its scope quite significantly. Traditionally, yes, absolutely. Gratuity is usually payable when employment ends after you've completed at least 5 years of continuous service. Right. The common triggers are, superannuation, retirement, resignation, or sadly, death or disablement. The sources confirm this general rule, but they highlight a really important detail. That requirement of 5 years continuous service, it's waived in cases of death or disablement. Okay. So the 5-year rule doesn't apply if it's due to death or disablement. And like maternity benefit, are there conditions where gratuity can be withheld or forfeited? Yes, the sources do specify that gratuity can be forfeited. It can be forfeited to the extent of any damage or loss caused by a worker's willful omission or negligence. Okay. It can also be wholly or partially forfeited for things like riotous or disorderly conduct, any act of violence during employment, or for any offense involving moral turpitude committed, in the course of employment. Right, standard conduct clauses. Now, here's where it gets really interesting, I thought, reading the sources. It ties back to that earlier point about covering different kinds of work. The sources explicitly state that the provisions for gratuity now include fixed-term employees and gig workers. That seems huge. It really is presented as a major step towards making these social safety nets more inclusive. Yeah. Traditionally, fixed-term employees were often left out of gratuity benefits because they were tied to that continuous service idea. Right, they wouldn't hit the 5 years necessarily. Exactly. And gig workers, well, by definition, they weren't in a traditional employment structure at all. So
Extending gratuity coverage to these categories, as the sources describe it, is a really notable shift in how the law is viewing their relationship with the entity they work for or through. Definitely. What about the tax side of gratuity under this new framework? Any changes there? The sources outline the tax situation. For government employees, any gratuity received is fully exempt from income tax. Okay. For private sector employees, it's partially exempt up to a certain limit. That limit is currently 20 lakhs or too many rupees. 20 lakhs. Yeah. Any amount received above that 20 lakh threshold is taxable according to the employee's normal income tax slab rate. Got it. And making sure this actually gets paid, that seems to be clearly placed on the employer. The sources are very clear on this, yes. Yeah. The employer is responsible for determining the amount of gratuity due and then paying it to the eligible worker within 30 days of it becoming payable. And if they delay. If there's a delay, the employer is liable to pay simple interest on the amount, calculated from the date it became payable right up until the date it's actually paid. So there's a penalty for late payment. Okay. Another critical area for worker protection: compensation. Accidents, occupational diseases. What does the new framework cover here based on the sources? Right, compensation. The sources detail provisions for compensation when an employee suffers an accident or contracts an occupational disease that, crucially, arises out of or in the course of their employment. That arising out of or in the course of phrasing is always key, isn't it? It is. And interestingly, a concept introduced here is the doctrine of notional extension. The doctrine of notional extension. Okay, that sounds quite legal. What does it mean in practice, according to the sources? Well, it's a legal principle that the sources say can potentially extend the scope of during employment. Essentially, it means that travel to and from work might be covered for compensation purposes if, and it's a big if, a direct link can be established between the accident during the commute and the actual conditions of employment. So, like if the employer provides the transport or maybe insists on a specific dangerous route. Exactly. Things like that. Yeah. If there's a causal link back to the employment itself, the commute might fall under the umbrella. It's not automatic coverage for just any commute, but it opens a door depending on the circumstances. Okay, so it can cover the commute, potentially. Yep. What kind of benefits are actually provided if someone is injured or gets sick due to work? Well, the sources state that employers must reimburse the actual medical expenses incurred by the employee for treating injuries sustained during employment. Medical costs covered. Good. Yes. And then for disablement, whether it's temporary or permanent, employees are entitled to cash benefits. The amount of this cash benefit is determined by a medical board based on their assessment of the extent of the loss of earning capacity due to that injury or disease. Okay. And I think I saw something about not getting multiple benefits for the same time period. No double dipping. That's right. The sources clarify that. A person can't receive multiple cash benefits specifically. They list sickness benefit, maternity benefit, or temporary disablement benefit for the exact same period of absence or inability to work. Makes sense. However, if they happen to be entitled to more than one of those for that same period, they get to choose which one they receive. So they get the better option, presumably. Right. And there's a provision if, sadly, a person passes away during a period they were entitled to a cash benefit. The amount due up to the date of death is paid to their nominee or legal representative. Okay, good to know. Finally, on the benefits front, how do the big existing schemes, ESI and EPF, fit into the picture under this new code on Social Security? Right, ESI and EPF. The sources indicate that coverage under the ESI scheme, the Employee State Insurance, can now be extended voluntarily to establishments or classes of employees if the employer and the majority of employees agree. So an opt-in possible. Yes, and it can also be mandatorily extended to hazardous occupations even if there's just a single employee working there. Even one employee in hazardous work. Yes, and the stated ambition, according to the sources, is to make ESI facilities available in all 740 districts of the country eventually. That's ambitious. It is. And crucially, as we touched on earlier, the sources reiterate that gig and unorganized workers can potentially link with ESIC for benefits. It's a major potential expansion. And plantation workers are also explicitly brought under the ESI purview now. Okay. And there was a notable point about ESI. What happens if an employer just doesn't pay their required contribution? Does the worker lose out? No, and this is important. The sources are quite specific here. If an employer fails to pay their due ESI contributions for an employee, the benefits that employee is entitled to must still be provided by the ESIC, the corporation.
Okay, so the safety net holds for the worker. Yes, the corporation then takes action to recover the outstanding amount from the employer, potentially with penalties or damages added on. Right, and EPF, the Provident Fund. For EPF, the Employee Provident Fund, the sources mainly mention the employer's contribution to the pension fund component of it. That's set at up to 8.33% of the employee's basic wages, dearness allowance, and any retaining allowance they might get. Okay. So the legal framework aims for pretty broad inclusion. It outlines specific benefits, employer responsibilities. But as the sources also really dig into, the rubber meets the road when it comes to actually ensuring compliance and addressing the gaps in implementation on the ground. Absolutely. This is where the ambitious intent really faces the practical reality. The enforcement mechanisms outlined include appointing these inspectors cum facilitators to oversee compliance. Inspector cum facilitator. Interesting title. It is, perhaps signaling a shift in approach. The sources also list penalties for non-compliance. These range from failure to pay required contributions, whether that's for Social Security, gratuity, compensation, maternity benefit, or that construction worker Cess will talk about, right through to obstructing officials doing their job. And penalties get tougher for repeat offenders. Yes, enhanced penalties are specified for repeat offenses, Yeah. aiming to create, a stronger deterrent effect. And to really make these implementation challenges concrete, the sources provide a very specific example, this performance audit of the building and other construction workers' welfare scheme, the BOCW scheme. This seems like a perfect case study, doesn't it? Because it's an existing scheme trying to cover a big segment of the unorganized sector. It really is. This audit looks specifically at the Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board, the TNCWWB. Now remember, the BOCW Cess Act from way back in 1996 levies a cess, basically a tax, on construction costs across India. The whole point is to fund welfare schemes specifically for construction workers. Right, that cess funds the benefit. Exactly. But this audit uncovered some, pretty significant deficiencies in how this scheme was actually being managed and implemented in Tamil Nadu. Okay, so what were the core problems the audit identified, according to the sources? What went wrong? Well, the audit highlighted several critical issues. Firstly, there was a lack of a centralized database. Data again. Yeah. This meant real difficulty in uniformly managing worker registration, tracking the cess collection from all the different construction projects, and then efficiently dispersing the benefits out to the workers. Everything was fragmented. So disconnected systems just making tracking incredibly difficult. Exactly. Secondly, the local authorities who were responsible for actually collecting the cess, they were using varied and inconsistent methods to calculate the construction costs when issuing building permits. Oh, dear. Yeah. So this led to wide variations in the amount of cess being assessed, even for similar types of projects. It created an uneven playing field and almost certainly led to significant undercollection of the cess too. Inconsistent assessment methods. Yeah, that's just a recipe for gaps and lost revenue for the scheme. It really is. And compounding that, the audit found there was no effective mechanism for the board itself, the TNCWWB, to actually verify the amounts of cess being collected. Really? Yeah. The board was essentially just accepting whatever remittances came in from the local authorities without any real system to cross-check if the correct amount, based on the actual construction costs, had been collected in the first place. That's a pretty fundamental breakdown in financial oversight, isn't it? It certainly appears so from the audit findings. And then there was also a major issue with worker registration data. Okay, what was that? The audit found a huge mismatch between migrant construction workers who were registered on a separate portal run by the Director of Labor and those actually registered with the TNCWWB itself, the Welfare Board. A mismatch how big? Well, the sources cite a really stark example. Out of about 1.30 lakh, that's 130,000 migrant workers registered on the Directorate's portal from various states, only a tiny fraction, just 7,319, were found in the TNCWWB's own database. Wow, only 7,000 out of 130,000. Yeah. That's a staggering number of workers who are theoretically registered somewhere in the system, but aren't linked to the very welfare board that's supposed to be collecting funds and providing benefits for them. That single data point just really underscores the practical challenge of identifying and actually covering the target population, doesn't it? It really, really does. It perfectly illustrates how easily a vast number of eligible workers can just fall through the cracks because of fragmented data systems and, frankly, administrative gaps. Unsurprisingly, the audit's recommendations directly address these issues.
Things like centralizing cess collection and database management, Makes sense. developing standardized guidelines for calculating construction costs to ensure consistency across the board, and generally strengthening the oversight mechanisms. And the insight from this specific audit, it connects directly back to the broader topic of the new labor codes, doesn't it? Absolutely. I mean, the challenges highlighted in that BOCW audit issues like the critical need for effective data management, the need to harmonize procedures across different authorities or states, ensuring consistent and verifiable enforcement. These are precisely the kinds of hurdles facing the nationwide implementation of the new labor codes. Especially for the unorganized sector and gig workers. Exactly. Especially when you're trying to extend coverage to the vast unorganized sector and these newer gig economy workers. It just shows that passing a law, however ambitious or well-intentioned, is really only the first step. Making it actually work on the ground at scale across such a diverse country, that's another challenge altogether, arguably a much harder one. So wrapping up this deep dive then, we've journeyed through India's really ambitious legal reform. This attempt to build a more comprehensive social security net through these new labor codes. The intent is clearly there to formalize protections, bring more workers under the umbrella, including the gig economy, using new tools like aggregator contributions, extending benefits like gratuity. Right. And as we've also seen, through the detailed analysis and the sources, and that really concrete example of the BOCW audit, translating that policy intent into widespread, tangible protection on the ground faces substantial hurdles. Huge hurdles, from those state-level implementation dependencies and stakeholder resistance to basic administrative capacity, the need for digital infrastructure, ensuring accurate worker data, which is massive, and achieving consistent enforcement. The gap between the legal framework on paper and the on-the-ground reality is, well, it's significant. It's a really powerful illustration, isn't it, of the complexities involved in reforming these kinds of foundational systems in a large, incredibly diverse economy like India's. Absolutely. And I think this raises a really important, broader question for all of us who follow global labor trends. As the very nature of work continues its rapid evolution everywhere, how effectively can large, diverse economies like India truly adapt their social security systems to ensure no worker gets left behind? Yeah. And what does this ongoing process of implementing these ambitious codes in India tell us about those universal challenges, the challenges of translating policy goals into practical reality for millions and millions of people? A lot to think about there. What stands out most to you listening to this from our deep dive into India's labor law transformation today? भारत का श्रम परिदृश्य बहुत विशाल है, मतलब करोड़ों लोग, खासकर असंगठित क्षेत्र में, और हाल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, वो दशकों पुराने जो श्रम कानून थे उनको सरल बनाने की कोशिश। बिल्कुल। कई सारे कानूनों को अब 4 नई संहिताओं मतलब कोड्स में समेटा गया है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। और हमारा फोकस खास तौर पर इस पे रहेगा कि ये जो नए कानून हैं उनमें भी वो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 हाँ, कोएस जिसे कह रहे हैं, हाँ, कोएस, ये कैसे सभी श्रमिकों तक मतलब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे नए तरह के जो कर्मचारी हैं उन तक भी सामाजिक सुरक्षा कैसे पहुंचा रही है या पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए जो जानकारी हमारे पास है उसे देखते हैं जरा। तो पहले ये 4 संहिताएं कौन सी हैं? एक तो मजदूरी पर है। जी, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, फिर औद्योगिक संबंध, और चौथी है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर। और मकसद जैसा आपने कहा सरलीकरण और सुरक्षा का दायरा बढ़ाना। बिल्कुल। और इनमें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 वो सबसे अहम है मेरे ख्याल से। क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसने पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को कानूनी तौर पर डिफाइन किया है। अच्छा, ये तो जरूरी था। ये वो लोग हैं जो ऐप आधारित काम करते हैं, है ना, जैसे डिलीवरी वाले या कैब ड्राइवर्स। हाँ, बिल्कुल वही। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पारंपरिक कर्मचारी नियोक्ता वाले मॉडल से अलग हैं। पुराने कानून शायद इनके लिए फिट नहीं बैठते थे। और इनकी संख्या भी तो कम नहीं है। वो नीति आयोग का कुछ अनुमान था। हाँ, नीति आयोग का अनुमान है कि 2029-30 तक इनकी संख्या करीब 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। बहुत बड़ी संख्या है ये। तो इस नई संहिता कोर्स में इनके लिए या बाकी श्रमिकों के लिए क्या मुख्य बातें हैं? कई चीजें, जैसे भविष्य निधि, पीएफ का दायरा बढ़ाया है, अब 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। ठीक है। असंगठित, संघित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इन सब के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने की बात है। एक नेशनल बोर्ड। जी।
और गिग और प्लेटफॉर्म वालों के लिए तो एक अलग फंड का भी प्रस्ताव है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारें और एग्रीगेटर्स मतलब कंपनियां वो भी पैसा डालेंगी। अच्छा, ये फंड वाली बात इंटरेस्टिंग है। और ग्रेजुटी वगैरह? हाँ, ग्रेजुटी अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी मिल सकेगी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं एक निश्चित समय के लिए। और ग्रेजुटी के लिए बीमा अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है। मातृत्व लाभ के नियम भी अपडेट किए गए हैं। तो काफी कुछ बदलने की कोशिश है, लेकिन क्या जमीन पर इसका कुछ असर कुछ दिख रहा है? देखिए, कुछ शुरुआती संकेत तो हैं, जैसे वो ई श्रम पोर्टल है, हाँ, सुना है उसके बारे में। उस पे 30 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिक रजिस्टर हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो पहले नहीं था। 30 करोड़, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज, मतलब कितने लोग कवर्ड हैं, वो 24.4% से बढ़कर करीब 48.8% हो गया है। डबल लगभग। हाँ, और रिपोर्ट ये भी कहती है कि करीब 65% आबादी किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर हैं। तो आंकड़ों में तो सुधार दिखता है। हाँ, आंकड़े तो एक तरफ है, लेकिन हम जानते हैं कि नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना वो बिल्कुल अलग कहानी होती है। सही कहा। शायद वो तमिलनाडु निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड TNCWWB वाली जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इसी तरफ इशारा करती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नीतियां कितनी भी अच्छी हों, अगर उनका क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन ठीक ना हो तो फायदा नहीं पहुंचता। तो क्या हुआ तमिलनाडु में? ये निर्माण श्रमिकों के लिए कुछ सेस लगता है ना? हाँ, एक उपकर मतलब सेस लगता है निर्माण की लागत पर 1 से 2%। ये 1996 के कानून BOCW सेस एक्ट के तहत है। पैसा इकट्ठा होकर श्रमिकों के कल्याण पर खर्च होना चाहिए। लेकिन ऑडिट में क्या मिला? ऑडिट में गंभीर कमियां मिली कई स्तरों पर। पहली बात तो कितना सेस इकट्ठा हुआ उसका ही ठीक से हिसाब नहीं रखा गया। अरे, फिर जो लोकल बॉडीज थीं उन्होंने पैसा इकट्ठा तो किया पर बोर्ड को देने के बजाय अपने खातों में ही रखा। मतलब पैसा जहां पहुंचना था वहां पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल। और तो और निर्माण की लागत का जो आकलन था वो भी गलत तरीके से किया। जैसे नियम 1% का है पर कहीं कहीं सिर्फ 0.3% पर गणना कर ली। इससे करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ। एक केस में तो 42 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान दिखा। बाप रे, और बोर्ड ने भी कुछ नहीं किया? बोर्ड ने भी संग्रह की पुष्टि पर मतलब वेरीफाई करने पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि फंड पर कंट्रोल ही नहीं रहा। देरी से पैसा मिला या कम मिला। अनुमान है कि करीब 78-79 करोड़ रुपए का तो सिर्फ ब्याज का नुकसान हो गया। ये तो बहुत मतलब सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये तो सीधे सीधे उन मजदूरों के हक का पैसा है जो उन तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। कोविड के टाइम पे करीब 1.5 लाख प्रवासी मजदूरों को राशन किट बांटी गई। हाँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनका कोई सिस्टमैटिक डेटा ही नहीं रखा गया कि किसको मिला, कौन रह गया, लाभार्थी कौन थे, उनकी लिस्ट में भी गड़बड़ियां की। तो मतलब फंड होते हुए भी सही लोगों तक मदद पहुंची या नहीं, ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। यही बात है। ये दिखाता है कि सिर्फ फंड बनाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना, ट्रैक करना और सही लोगों तक पहुंचाना, ये असली चुनौती है। तो ये चुनौती सिर्फ निर्माण श्रमिकों की नहीं होगी, असंगठित क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। इसमें कौन कौन आते हैं? हाँ, बहुत बड़ा और बहुत विविध है। इसमें घर से काम करने वाले लोग हैं, अपना छोटा मोटा काम करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ये सब आते हैं। इनके लिए 2008 का एक कानून था पहले, UWS एक्ट, और अब कॉसेस 2020 उसे आगे बढ़ा रहा है। हाँ, कॉस 2020 का मकसद है कि इन सभी तक कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा पहुंचे। दायरा बढ़ाने की कोशिश है। और वो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जिनके हमने शुरू में बात की थी, उनके लिए कॉस 2020 में परिभाषा देना और एक अलग फंड का प्रस्ताव रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सही बात है। वैसे क्या कुछ खास सेक्टर के लिए पहले से भी इस तरह के प्रयास थे? मुझे याद आ रहा है सिने वर्कर्स के लिए भी कुछ था शायद। हाँ बिल्कुल, सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981 से है। तो ये दिखाता है कि अलग अलग सेक्टर की खास जरूरतों को पहले भी पहचाना गया है। नई संहिताओं का एक मकसद शायद ये भी है कि इन बिखरे हुए प्रयासों को एक ज्यादा सिस्टमैटिक, एक एकीकृत ढांचे में लाया जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ तो श्रम संहिताओं जैसे बड़े महत्वाकांक्षी सुधार हैं, लक्ष्य है सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना, सबको कवर करना, और आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि कवरेज कुछ बड़ा है जी। लेकिन दूसरी तरफ TNCWB जैसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि जमीनी हकीकत में मतलब क्रियान्वयन में
बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। रिकॉर्ड रखने से लेकर निगरानी तक, फंड के सही इस्तेमाल तक, हर लेवल पर दिक्कतें दिख रही हैं। बिल्कुल सही है, कानून बदलना जरूरी है, वो पहला कदम है, लेकिन असली चुनौती ये पक्का करना है कि भारत की इतनी विशाल और विविध वर्कफोर्स, खासकर जो अनौपचारिक क्षेत्र में है या अब ये नई गिग इकोनॉमी में आ रही है, उन तक इन कानूनों का असली फायदा पहुंचे। हाँ, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सवाल यही है कि कानून बनाने से आगे बढ़कर वो कौन से व्यवस्थागत सुधार, कौन सी मजबूत निगरानी व्यवस्था चाहिए होगी जिससे ये सुनिश्चित हो कि इरादा हकीकत में बदले। ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।